kidnap किया है. I have literally kidnapped her because Stupid. It wasn't. You see, Stupid right here, na. So when they got it on set, I remember that I was so in awe of her. I was like, I'm going to take her home. I'm sorry. And Bachchan sir, I remember, he's like, no, she's coming to my house. And we sort of like had this actual father-daughter wala argument. I think I had it with Mr. Bachchan there at that point of time, where I was like, no sir, I'm taking her home. And both of us did this the whole day. We were like, no, I'm going to take her home. I'm going to take her home. So in the end, she's in my house. Having been in the industry for over 50 years, what are the elements that get you on board a film? And what's the most exciting part that made you say yes to Goodbye, sir? एक और नौकरी मिल गई और क्या? सर हमारी उम्र में क्या है, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और जहाँ कहीं भी नौकरी मिल जाती है वहाँ हम भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को, नौकरी मिल गई काम करने की. अगर हुआ भी हो तो मैं क्यों बताऊंगी? है भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है. Sorry मैम. हाँ, हमारी पर्सनल बात पर्सनल है. अच्छा, ठीक है. हाँ, जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो तो मैंने पहली बार देखा कुछ फिल्म का, मतलब ट्रेलर देखा, और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी तक क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा मुझे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ जो मैंने देखा, और जिस तरह से ट्रेलर बनाया, जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी और जो हमने शूट की थी, उसके बाद जो ट्रेलर बनाया, इट्स आई डोंट नो व्हाट टू से. मैं अभी भी ऐसे हूँ. Talk about acing it when Mr. Bachchan is on the same stage. I mean, there is nobody I have ever wanted to work with except for one man, and that is Mr. Amitabh Bachchan. And finally, my dream has come true. I have a selfie as a child with him, a photo as a child with him, and I have a lifelong dream to click a selfie with him. I will do it just now. Can somebody click this picture for me? No, that's a moment. Oh, thank you so much. And I think this is one of the scripts that has made me most happy, and to have to work with such a great cast, Mr. Bachchan, Vikas, I think I'm honored. What else to say? I don't think I can even talk about acing it with these people. मतलब not just the industry, लेकिन I think if there's one thing in my life which I would say I would like to say goodbye to is, like Bachchan sir said, COVID, first thing. Yeah. But I think ताज़ा. But I think just I would say the negativity around us, or the negativity around anyone. I think I'm a happy, positive person, so I wish the world was also like that. It is not a coincidence. This is the year Mr. Bachchan turns 80. Yeah. It's a big day. He's the Mahanayak of this country, and huge. I think it's a huge day because we are now waiting to celebrate him. It's also the year my dad turned 80. So I feel like I think it's got to do with the fact that it's our way of celebrating him. You know, I think Vikas came up with this idea, and I think it was great. I think everyone saw me get emotional. Actually, एक बचपन से मैंने एक ही इंसान के साथ काम करने का मेरा सपना था, वो अमित जी हैं. Because as a child, my mother is aware that I used to go for children's birthday parties to Amit ji's house. Shweta and Abhishek were my friends, and Amit uncle used to always call up my father and say that she just sat and stared at me all evening. I don't think I have ever wanted to work with anyone. No Khans, nobody.
except for Mr. Amitabh Bachchan. And finally, Vikas has made my dream come true. And so for me, and I think that experience ऐसी पिक्चर करने का या प्रोड्यूस करने का मौका बहुत एक अलग इमोशन होता है, you know. कहते हैं कि सबसे कठिन जन्मदिन वो होता है जिस दिन आपके जो जन्म आपको देते वो नहीं होता, और वो दिन बहुत लोगों की लाइफ में आता है. वो डर, वो फियर, वो दिन, I don't know how people live it. So the film is very close to my heart because it is a film about family, and we are nothing without our families. Me in real with my parents, I'm this child who's always been in a hostel. So for me, arguing with my parents was never a thing. So I think it shows the closeness that you have with your parents. Of course, you fight only with people who you're extremely close to, and people who you're with constantly, and people who you love extremely. So I think I sort of like, when I had the moment of being with my parents and all of that, I had already matured. Like there was no like fights between us. Now I just understand what they're asking for and all of that. So I think it's a very individual thing, and I think this film is really going to, it's extremely special because it's something which happens in every house. Everyone has a mother, everyone has a father, everyone has a sister, everyone has a brother. It's a family. So I think this film is something which is really going to touch the core hearts of people. And no matter how many times I sort of like watched the trailer, I was still, you know, tearing up. So I think it's those moments, and it's special, this film. आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया. कॉमेडी बहुत टफ काम है, बहुत टफ आर्ट है, और मैं ऑनेस्टली ऐसा फील करता हूँ कि मुझे कॉमेडी करनी आती नहीं है. मैं उसे और सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, और ऐसा मैं फील करता हूँ. मैं ह्यूमिलिटी के लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ. प्राइमरीली जब मैं थिएटर भी करता था, ड्रामा भी करता था, मास्टर्स किया मैंने थिएटर में, तब भी मेरे को सब सीरियस रोल ही मिलते थे, और मुझे पता नहीं था कि कॉमेडी में मेरा शायद सुर लग जाएगा. जब लगा तो मुझे बड़ी खुशी हुई. हाँ, मैं नकल करता था सब लोगों की, और लोग हंसते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था. तो कॉमेडी करके मुझे बेहद खुशी मिलती है, लेकिन कॉमेडी इतना टफ है कि हर वक्त आप कर नहीं सकते. तो आपको डिटॉक्स करने के लिए दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ती है, और ये एक बात है. लेकिन मैं जिस तरह से आर्ट को लेता हूँ, मुझे अलग अलग किरदार निभाना बहुत अच्छा लगता है, और वो सीरियस हो या कॉमेडी हो. कॉमेडी में सिर्फ उसका कैरिकेचर बना देता हूँ, और सीरियस में जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो. और मैं लकी हूँ कि मुझे इस तरह की भूमिकाएं करने को मिल रही हैं. थैंक्स टू विकास सर ऑल्सो इन सारी फहरिस्त पे, जिन्होंने सनफ्लावर में बड़ा खूबसूरत किरदार दिया निभाने को, और अब ये भी बड़ा मज़ेदार एक प्यारा सा कैरेक्टर है जिसे मैंने बड़ा एंजॉय किया. और अलग अलग किरदार निभाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं बस ईश्वर से यही दुआ करता रहता हूँ हमेशा कि मुझे और कुछ आता नहीं है, थोड़ा बहुत यही आता है, और यही मैं करता रहूँ और अलग अलग भूमिकाएं निभाता रहूँ. मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. थैंक यू. I think I've had such a blast shooting in the film. Right. And of course, shooting with a legend and shooting with Neena ma'am, shooting with the whole team. It was like the moments of shooting together, the memories you carry from shooting together. It's something which is engraved in your heart. Yeah. It's something which will always live. Of course, every actor wants to, you know, do a film with Bachchan sir. So when I heard the script and when I heard it was Bachchan sir and it was Vikas sir and the whole team, and I was like, you know, there's absolutely no reason to, you know, back out from this. This is once in a lifetime sort of a memory. So I'm here today. We've just seen the trailer of the little joy that we've created, and we're all so overwhelmed, I think, today, and it's a beautiful feeling. And in a way, we felt the response that we got over here. Yeah. So is there anything that you'd like to tell Mr. Bachchan yahan pe abhi when he's here with us? Sir, I love you. Yes, Rashmika. It's been an absolute pleasure. I've
I remember the letter that I got from you, and I still keep it with me, very close to me in my library. And thank you for being you, and thank you for letting me work with you. It's been super special. Please write a letter back to me so that I can also say my contribution. I'll write. I'll do that, sir. I have to. I will. Thank you, With a Rashmika. Yeah, please. Little gift also I'll send you. Sunil is, I think, one of the finest actors we have in the country. Wow. And मैं हर फिल्म सुनील के पास लेके जाता हूँ. हर फिल्म, हर शो, जो भी मैं बनाता हूँ, मैं सुनील के पास लेके जाता हूँ. फिर भाई साहब डिसाइड करते हैं कि वो उसका हिस्सा बनेंगे कि नहीं. मैं बोलता सर ये वाला रोल कर लो. अच्छा नहीं तो ये वाला कर लो. अच्छा चलो मम्मी का ही कर लो. पर रोल कर लो आप. और मैं भी एक और बात ऐड करना चाहूँगी. मैंने इनके साथ करोड़ों साल पहले फिलिप्स टॉप 10 किया था, है ना? क्या किया था वो कॉमेडी? जिगर पर बड़ी आग है. हाँ. लेकिन ये जो कह रहे हैं इसके अलावा एक्टर अच्छा है, कॉमेडी अच्छी करता है, ये बहुत गुड लुकिंग भी है और इतना हैंडसम है. और लोग इनको ऐसे नज़र से देखते नहीं है. आई मीन मैं तो नहीं देख सकती, यंग लड़कियों को देखना चाहिए. Every character I play, like बधाई हो for example, like सांस for example, a lot of characters. जैसे हम लोग जब थिएटर करते थे ना, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो थिएटर करते थे तो एक सेट बनाया जाता था. वो सेट बनाने में और उस सेट में हम 1 महीना, 1.5 महीना, कई बार 2 महीना रिहर्सल करते थे. उसके बाद शो होते थे. सो सबसे तकलीफ जब होती थी जब प्ले के बाद सेट टूटता था, हमारा दिल भी टूटता था. सो इसी तरह अब हम ऐसे ही भांड लोग हैं एक्टर कि हम एक काम करने जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे में चले जाते हैं, उसको भूलते नहीं, उसकी यादें साथ रहती है. और ये हमारा काम ही ऐसा है, आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे की अच्छी यादें याद करते रहते हैं, सेट टूटते रहते हैं, नए सेट बनते रहते हैं. ये कैसा सवाल है यार? यही तो सवाल. अच्छा सवाल. अच्छा सवाल है. ऑब्वियसली यार. हैं तो नहीं ना बच्चे सब यहाँ पे? पता चला कि लगा हुआ कनेक्शन अभी तक. तो ऑलमोस्ट हर रोज आया है. पहली बात तो मैं यहाँ खड़ा हुआ था, सर स्क्रीन पे थे तो मैं तब भी नर्वस हो रहा था. सब लोगों की चाहत है सर के साथ काम करना, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी उस लाइन में हूँ. सर को देखना, मैंने पिक्चर की इसीलिए थी कि सर रोज़ सर को देखूँगा, जाके बात करूँगा, मज़ा आएगा. और अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा धुक हो रहा है. तो ऑफकोर्स बच्चन साहब को देख के ही 90% एक्टर्स बने हैं आज के टाइम में, और 10% है वो झूठ बोल रहे हैं. तो यार जब भी वो जाते थे मैं तुरंत शुरू हो जाता था. मेरे उतरे ही नहीं थे. मैं कैरेक्टर सिर्फ अपना तब करता था जब एक्शन बोलते थे विकास सर, अदरवाइज मैं उन्हीं की कॉपी करता था. सामने पूरा दिन सिर्फ यही करते थे. पूरा दिन हम सब वेट कर रहे हैं, शॉट कब ले, ये लगे हुए हैं. लेकिन पैर छूने का चल रहा है. ये सुबह 8:30 बजे आते थे और सर और सुनील दोनों 1 घंटा यही चलता रहता था. हम सब वेट कर रहे हैं कि हम शॉट कब ले. I think I've always picked the scripts as my gut feeling says. I just believe that what it's meant to be for me will happen to me. Like I just feel like that's the universe way of saying it. So it's purely a gut feeling. But also to top it off, when I heard such a script, of course I'm in a point in my career where I'm going out there, testing my waters. I don't know what's right, I don't know what's wrong, I don't know what people are going to expect of me, I don't know what people are looking forward of me. But I feel like I'm an actor. I want to do good films. I want to have fun while I do it. It's not like for life I'm going to be, doing the same thing. One day I'm also going to die. So till when I'm
till when I am able to work this happily and make such memories, I'm willing to do so. And while making such memories, might as well make everyone smile, and might as well give good memories to everyone who's watching the film. And this is so special because of the things which you're already seeing, in the trailer. So it's going to be extremely special. Yeah. मैंने बचपन में अपनी माँ से बहुत मार खाई, और उस वक़्त मुझे, जैसे विकास कह रहा था ना, वो यहाँ ही रहते हैं, और मसाबा को मैं बताती हूँ कि तुम तो बड़ी लकी हो कि मेरी मम्मी वाली, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी आधुनिक हो गई हूँ, पूरी तो नहीं हुई उसके हिसाब से। तो किस बात में मार खाती थी सबसे ज़्यादा? तब नया फैशन आया था, मतलब बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, कि बालों में तेल नहीं लगाना। तो मैं कहती थी कॉलेज जाऊँगी, स्कूल जाऊँगी, मैं तेल नहीं लगाऊँगी, पर हमारे यहाँ तो तब तो तेल लगा के जाते थे। तो सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है कि बालों में तेल नहीं लगा के जाऊँगी। सो जनरेशन गैप तो होता है, लेकिन वो यादें, और जैसा विकास ने कहा, अब ये जो बात मैंने अभी कही है, ये मुझे अभी ध्यान में आई है, पहले से मैंने नहीं सोचा था। तो ऐसी चीज़ें, कितनी चीज़ें याद आएंगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, मैं उस दिन मसाबा को भी बोल रही थी कि आप कितने फेमस हो जाओ, कितने अमीर हो जाओ, कितना आपका नाम हो जाए, कितना आप काम के लिए आपकी प्रशंसा हो, लेकिन अगर आपको पारिवारिक सुख नहीं है तो वो सुख बहुत कम हो जाते हैं। मैं उसे कह रही थी कि जब मसाबा के पैदा होने से पहले जब मेरी आउटडोर शूटिंग होती थी, मैं बड़ी खुश होती थी, क्योंकि मेरे पास घर पे वापस आने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं घर पे वापस किसके लिए आऊँ अकेले। लेकिन जैसे ही मसाबा पैदा हुई, नाउ आई यूज्ड टू विश कि मेरी शूटिंग बाहर ना हो, मेरी शूटिंग बॉम्बे में ही हो, क्योंकि मुझे घर वापस आने के लिए मेरे पास कोई था। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अ फैमिली। एक्चुअली मैं कल आपस में हम लोग भी बात कर रहे थे, और मैं भी देख रहा था पिक्चर और सोच रहा था कि ये थॉट्स कब आए, व्हेन डिड दीज थॉट्स कम, कि ऐसा लाइफ होता है, ऐसा कोई चला जाता है, ऐसी फैमिली होनी चाहिए। सो एक्चुअली यू कांट रियली पुट अ फिंगर टू व्हेन अ थॉट कम्स टू योर हेड, बट while writing it and while making this film, I was just feeling overwhelmed with the happiness of family. And family is not just mom, dad, sister, brother. Family is also friends, family is everything. And I was just getting happy while writing it, And I was thinking anything and everything that we face together is happiness. And I could somehow find the happy side to everything, Now, whether it was Queen, where I felt the worst thing that can happen in your life is probably the best thing that God sent to you, Or in this one, the moment that so you must have realized that the girl is told that your mother's no more there. But I don't think mother's ever leaving, She's never going. And because of presence we feel at any point in time. I live in Bombay. My parents live in Delhi. But I think my mom and dad are just like here. They're just sitting here. And I went through a moment which I would want to share, which was a very nervous moment for me. When we were writing, making the film, COVID was happening. And somehow we felt we're going to lose people. And I was just hoping to hell that my mom and dad see this film, And yeah, they're going to see it now. So I'm glad. नहीं, मेरा तो इंतज़ार भी नहीं था, क्योंकि मैं तो सपना भी नहीं लेती थी उनके साथ काम करने, तो मेरे को कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मेरा तो अचानक ऊपर से झोली में कुछ गिरा, और मैंने कहा ये सच है क्या, और बस वो सच हो गया। फिर उसके बाद एक और सच हो गया। तो मैं, क्योंकि जब मैं आई थी ना, तो फिल्में सिर्फ होती थी, कोई OTT TV कुछ नहीं था, तो मैं छोटे छोटे कोई सर्वेंट का रोल कर लिया किसी पिक्चर में, मैंने कहा एक भिखारी की गैंग का रोल कर लिया मैंने। सो उस टाइम
सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा मौका आएगा जब सर के साथ काम करने को मिलेगा, तो ये तो इंतज़ार था ही नहीं। लेकिन आपके फैंस के लिए बहुत लंबा इंतजार था, क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि आप दोनों को एक साथ देखना हमारा एक सपना ही था। अब मेरे को आपसे पूछना है कैसा लगा हमें एक साथ देख के? बहुत ही अच्छा, अच्छा लगा। मैं इंतजार कर रही हूँ फिल्म रिलीज हो और मैं देखूँ। जनरल फर्ज कर रहा हूँ सुनील, मेरा भी हो गया। दोबारा एक बार फिर लो, एक बार फिर छोड़ेंगे नहीं हम आप। सर आई थिंक हमने सब ने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत आर्ट किया है, एंड हम सब ने अपने पेरेंट्स को बहुत चीज़ें बोली भी हैं, गुस्सा किया है, बट देयर इज ऑलवेज दैट टाइम व्हेन यू गेट स्कैर्ड। पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड। आई डोंट नो व्हाई आई एम सो इमोशनल व्हाइल सीइंग दिस। I actually welled up when I saw the promo. I think it's an age you start worrying for your parents, and I don't know why I'm doing this. I'm hating it, so I'll pass. I think Bachchan sir, I met him 2 years back on my birthday. I remember this because I was like, oh my god, I'm working on my birthday and I'm meeting Amitabh sir on my birthday. So I remember this day very clearly, where I just wanted to introduce myself to him. So I waited. Sir was shooting, of course, and I was waiting. I was just wanting to say hi to him. And I'm just standing like in one corner, I'm just standing like that, and sir just walks in and he crosses and he goes. So I'm like, okay, not now. Let me go inside, try it again. Because I was out there flashing a big smile. I was like, hi sir. And then he's like, okay, just walked. Because of course he's thinking about the scene, what to do in the scene and everything. And I walked in and I was like, sir, hello, Rashmika, nice to meet you. I'm going to be playing your daughter. Okay, and I was out. Because I was so nervous, and at the same time I had to, it's a responsibility, right? You're going to be working with the actor, so it's good to just, you know, get each other's energy on the first day and everything. And then throughout the shooting, I remember that Bachchan sir, like every time, like initially I thought he didn't like me because he was like so strict and he was just like sitting there and he was just, you know, we always had this banter, a daughter and the father, like we always be like, what are you saying, what, there's no sense, and ye. But I remember that I think one day just randomly when I walked into the set and everyone was like, did you see your Twitter? And I'm like, no, what happened? And they're like, Bachchan sir just posted a picture saying Pushpa. And then I was like, wait, what? That happened? Okay, when did that happen? I didn't see. But I think our relationship just got closer and closer throughout the making of the film. And him as a person is a beautiful person. So I'm just happy that I got to see that side of the legend, you know. And coming to Neena ma'am, I think the first day itself when I saw her, I just sort of like felt this happy wala vibe, you know, like I just wanted to go and chill with her, and I was a personal photographer in the set. I have so many pictures of her from the set because I was like, Neena ma'am, see, look at the camera, smile. I'm a very good photographer. Now I'll start putting them all out, of course with her permission. But Of course. But yeah, I think I just was so comfortable, and it was easy with Neena ma'am. It was just like both of us, and we were talking about everything under the sun, and yeah,
I love you. सो आई ऑल्सो लव यू. मैं प्रेस वालों को बोलना चाहती हूँ, देखिए मैं बहुत ईजी हूँ, मैं डिफ़िकल्ट नहीं हूँ जैसा आप कई बार लिखते हैं. मैं बहुत ईजी हूँ. हाँ. She's a sweetheart. I second that. I